The setback for Sharjeel Imam and Umar Khalid, the Supreme Court also today denied bail to them, particularly in the Delhi riots conspiracy case. The court said there is enough initial evidence to suggest their involvement under the anti-terror law, UAPA. Judges noted that the material shows they played a key role in the planning, mobilization and overall direction of events and are central to the entire conspiracy. At the same time, the court granted bail to 5 other accused, namely Gulfisha Fatima, Miran Haider, Shifaur Rahman, Mohammad Salim Khan and Shadab Ahmed, making it clear that the misuse of bail would lead to its cancellation. The court has left the door open for Khalid and Imam to seek bail again after 1 year or once protected witnesses in the case have been examined. इसमें यही कहना चाहेंगे दो लोगों को बेल नहीं दिया उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, लेकिन 5 लोगों को बेल देना ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कि नहीं देनी चाहिए। अगर उनको बेल दी जाती है तो हम 15 सनातनियों के जिनके बेटे और भाई मारे गए हैं उनको भी फांसी देने जैसा काम किया जा रहा है। हम चाहते हैं आगे फास्ट ट्रैक कोर्ट में रेगुलर सुनवाई के दौरान इनको कम से कम सजा दी जाए, तो मौत की सजा देना आवश्यक है, जो आगे भविष्य में इस तरह के दंगे न हो। नहीं, कोई कमेंट नहीं है, नो कमेंट। किस तरह से देखते हैं? नो कमेंट, अनफॉर्चुनेट। नहीं, कुछ नहीं कहना है, जो जजमेंट आ गया वो आपके सामने है, उसमें क्या कहने की जरूरत है। So Supreme Court was possibly the last hope for these under trials. Why has even the Supreme Court denied bail to Imam and Umar? Let's break that down for you. First of all, the prosecution disclosed prima facie roles of Umar Khalid and Sharjeel Imam, and the court was satisfied to the extent of planning and organization on the part of these individuals. Now, Sharjeel Imam and Umar Khalid's role is considered central to the conspiracy. Umar Khalid and Sharjeel Imam stand on a different footing than others, which is why they haven't been granted bail while other accused have been, and the court has made that very clear. Delay alone cannot operate as a trump card for bail is a very important statement that has come in from the Supreme Court, because this will possibly set a precedent in other cases as well. There have been many questions raised over bail not being granted under certain statutory offences, like there is a UAPA, of course, but also the Prevention of Money Laundering Act, for example. Offences regarding security of nation require a different bail regime. Nation security, preservation of public order are important facets, the court noted. Terrorist act, not only violence but also disruption of essential services, and certainly as far as disruption of essential services is concerned, that was seen in these protests, quote unquote, that were organized, which eventually or at repeated occasions descended into violence, stone pelting, violence even against ordinary citizens and the police officials. Assessment of persons' liberty different in cases of threatening foundation of state, which is why the issue of personal liberties alone cannot be used as far as bail in such cases is concerned. Incarceration only due to mere passage of time cannot be considered punishment. These are some of the observations that the Supreme Court has made as far as this case is concerned. Simran Babbar is joining us live with Hari Solanki, father of one of the Delhi riots case victim. Let's listen in. Simran. Well, absolutely. As the victim of the deadly Delhi riots have also, in fact, commented on the Supreme Court judgment today, I'm being joined by Hari Singh Solanki, who is the father of the victim Rahul Solanki, 26-year-old young boy who died during the Delhi riots. Hari ji, आज बहुत बड़ा फैसला आया है बेल के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट ने 7 लोगों की बेल थी, उसमें से 5 को मिल गई है। शर्जील इमाम, उमर खालिद, इन लोगों को बेल नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, 2 लोगों को जमानत दिया है, उसके लिए हम शुक्रिया करते हैं, लेकिन जिन लोगों को बेल दी है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और मेरे लिए ही नहीं बल्कि हम बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, पीड़ितों को फांसी देने का काम किया है, और इस तरह से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम तो यही कहना चाहेंगे, इनको बेल देना बिल्कुल ठीक नहीं था, और आगे ये बताया जा रहा है कि इनका डे टू डे ट्रायल चलेगा। डे टू डे ट्रायल में मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि 6 महीने के अंदर ट्रायल करके इनको कम से कम फांसी की सज़ा दी जाए। आप अपने जो यंग बेटा है जिसको आपने खोया इस राइट्स में, आपने ऐसा भी बोला है कि इस तरीके से आप लोगों को फांसी मिल रही है, ऐसा फील हो रहा है, अगर इनको बेल मिल जाती है
तो ऐसे भी और बहुत लोग थे जिन्होंने अपने अपने लोगों को खोया है पूरे इस राइट्स के केस में। तो आगे के कार्यवाही पर, सुप्रीम कोर्ट की आगे की ऑब्जर्वेशन पर उनके कमेंट्स को आप कैसे देखते हैं? देखो, आगे की कार्रवाई ऐसा है कि आपने कहा कि राहुल ही नहीं, मैं तो उन 15 लोगों के लिए कहूँगा कि जो पीड़ित थे। पीड़ित वो लोग थे जो सनातनी थे, और प्रतिवादी वो लोग थे जो कि हमारे बच्चों को मारने वाले थे। मान के चलो, अगर वो लोग मारे भी गए तो वो हमें बचाने के चक्कर में लोगों ने उनको मार दिया होगा, तो उनका कोई दोष नहीं है। हम तो ये कहना चाहेंगे, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह से जो निर्णय दिया है जब 5 लोगों को बेल देने का, वो बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम सभी पीड़ितों को फांसी देने का सुप्रीम कोर्ट ने काम किया है। इस निर्णय पर पुनः विचार किया जाना आवश्यक है। जी, तो आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो आज आया है, मतलब पूरी दुनिया का इस पे एक बहुत बड़ा अटेंशन था, क्या आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं? क्या आप संतुष्ट नहीं हैं? इस फैसले से कतई भी हम संतुष्ट नहीं हैं। मैं ही नहीं, भारत देश के सभी सनातनी लोग या पीड़ित लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं। और अगर आगे चलकर इनको अगर सज़ा नहीं सुनाई जाती है, अगर सज़ा दी जाए तो कम से कम फांसी की सज़ा दी जाए, और इससे कम दी जाती है तो हम आने वाले समय में सभी लोग भारत देश में अनशन करेंगे। आपका बेटा उसमें राइट के अंदर जिस तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण उसकी जान गई, पर यह भी कहा जा रहा है कि अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ। तो जब ट्रायल शुरू नहीं हुआ है और उनको इतनी बड़ी 5 साल की सज़ा दी गई, उनकी साइड से भी जो उनके एडवोकेट्स हैं वो ये आर्ग्यू कर रहे हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट के आगे ये बातें रखी गई, क्या आपको अमान्य लगती हैं? सुप्रीम कोर्ट भी उन बातों को सुन रहा है, दोनों पार्टीज को, कि किस तरीके से किसकी किस हद तक गलती थी, इन सब बातों को पैमाने में लेकर एक जजमेंट दिया गया है। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे लोगों की क्या गलती थी। एक गलती बताएं। गलती उन लोगों की थी जिन लोगों ने षड्यंत्र किया, गलती उन लोगों की थी जिन्होंने हमारे भाई और बेटों की हत्या की। हम लोगों की क्या गलतियाँ थी? गलतियाँ कोई बताए तो सही। वकील तो ऐसा है, केस सही हो या गलत हो, एविडेंस के आधार पर फर्जी एविडेंस भी तैयार किए जाते हैं और लोगों को बचाने का काम किया जाता है। वो काम इस समय षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये ठीक नहीं है। अभी सबसे बड़े मन में एक बात कही जाए तो विचार क्या है? जैसे आप दुखी तो मुझे दिख ही रहे हैं, बट अगर एक विचार देखा जाए आगे के लिए, तो आपके मन में क्या है? हम तो हमारे मन में ये विचार है कि भाई इन्हें कम से कम फांसी दी जाए, और इन्हें फांसी ना दी तो हमें फांसी देने का सुप्रीम कोर्ट काम करे, तो हम फांसी भी चढ़ देना चाहते हैं। जी। Well, all right. In fact, as you've heard the father of the victim, by his emotions, that he is in fact in a vulnerable state as well. He seems to be very pained by the bail that has been granted to the other accused who have moved the apex court, but at the same time he is categorically saying that it is just not a symbolic fight for the pain of a father who has lost a young son, but many others who had in fact been communally affected due to the Delhi riots. What really happens from now on in fact is to be seen and witnessed after the court also takes the cognizance going ahead, but this is in fact the testimony by the father who has lost a young son in the Delhi riots in 2020. Yes, absolutely. Remember, there were many victims of these riots, which the Delhi police has categorically called a regime change operation. A lot of violence broke out, remember, as early as December 2019 in Delhi at various places, and it continued to erupt at many of these protest sites through that period between December, January, and finally, when Donald Trump, the American president, was visiting Delhi, full-scale riots broke out as far as this opposition, so-called opposition to CA is concerned. My colleague Anshul Singh is also joining us. Anshul, no relief then for Umar Khalid and Sharjeel Imam, and both of their roles have been separated by the Supreme Court when it comes to this case. Well, definitely that is very important and a very pertinent point, because this entire judgment will now set up precedent to many other such such cases, because remember, it is for the first time that in a UAPA case, the Supreme Court has gone ahead and very categorically defined that yes, a bail can be granted in UAPA, but yes, the role of each and every person who is said to be involved, that needs to be looked into. The prima facie evidences that have been put forward, that needs to be examined before granting them bail. Also, in the judgment that has been given out today, the Supreme Court has defined terrorism as well, and in fact added a few lines to that as well. If there is this conspiracy to somewhere or the other disrupt
the emergency services. That also falls under terrorism, is what the Supreme Court has said. So this is going to be very, very significant and very, very pivotal in this entire investigation and the entire hearing. Whenever that starts from the trial court as well. But yes, the manner in which the Supreme Court has dwelled a deep dive into the role of each and every accused, how were they involved, Umar Khalid and Sharjil Imam, how they were actually planning to go ahead and disrupt the security of our country. This is something that is very, very significant at this point in time, and definitely a massive thumbs up to the investigation of the Delhi police, which had clearly gone ahead and stated that this was in fact a regime change operation that was being undertaken by Umar Khalid and Sharjil Imam. They had planned this entire protest. They had planned the timing of this protest. The first protest that happened in December, that did not bear the fruits that they wanted. And then eventually when Donald Trump came to India, they went ahead and created these artificial quote-unquote riots that happened, which were absolutely not, which were actually not natural, is what the Supreme Court is of the opinion. However, the Supreme Court has not gone into the merits of these allegations, but prima facie the Supreme Court is of the opinion that yes, these allegations actually make sure that these accused, Sharjil Imam and Umar Khalid, should stay behind the bars. Right. Anshul, I do appreciate you joining us.